Hello students, today we are going to see how to do exercise 23 of the chapter distance, time and speed. This is for class 5. So let's start. Please see the video fully and prepare well for your exams. So let's start. The first question is, a boy rides his bicycle at a rate of 15 km per hour. Copy and complete the table टू शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय। एक बॉय जो है वो 1 आवर में 15 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। सो 2 आवर्स में कितना करेगा? डबल। फाइन। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। सो हेयर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। 15 2 जा 30। नाउ इन 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर वी हैव मल्टीप्लाइड 1 बाय 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी वी विल मल्टीप्लाई बाय 8। So 15 8 ja 120. Now here 10 times. So we have multiplied it with 10. So in the lower part also multiplied with 10. So it will be 150 and 12 times. So 15 multiplied by 12 will be 180 and 15 multiplied by 20. Here it is being multiplied by 20 times. So it is 15 multiplied by 20 is 300. 15 to the 30. It's fine. So that's how it's so simple. Now the second one is, a boy walked 80 meters every minute. Complete the table to show the distance walked by the boy. It's the same as the previous question. I am just doing it first part. Rest you will do by yourself. So it is here multiplied by 2. 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 multiplied by 2 will be 80 2 जा 160 and for 80 को अगर this is meter, if we want to convert it in kilometer we'll have to divide it with 1000. So it is 0.08. Fine. Similarly इसको करेंगे तो 160 divided by 1000. So it will be 0.160. ठीक है, you can skip this 0 in the end, so it will be 0.16. एक और कर लेते हैं. So here this 1 will be multiplied by 5. So 5 1 fine. So here 80 will be multiplied by 5. So यहाँ पर भी 80 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 85 जा 8 5 ja 40, 400. So here it will be 0.4. Fine. So that's how you are going to do the second question. You can complete it by yourself now. Anil can run 200 meters in 25 seconds. Find the speed of in meter per second. So in third question, what they have given us, they have given us distance which is 200 meter and they have given us time which is 25 seconds. Fine. We have to find out the speed. Speed के लिए formula है हमारे पास distance over time. So it will be 200 divided by 25. It is very important to learn this formula. This is speed is equal to distance over time. Is so simple. So let's reduce it. 5 5 ja 25, 5 4 ja 20, 5 1 ja 5, 5 8 ja 40. So your answer will be 8 meter per second. Fine. Okay, now the fourth question. A car travels at a speed, here the speed is given 45 km per hour. Fine. How far will it travel in 3 hours? So time is 3 hours. And you have to find out the distance. The value of distance is unknown. So you already know speed is equal to distance over time. Fine. So that means distance will be, we will multiply it here. So it will be speed into time. Fine. You can write capital T or small t is the same. So distance is equal to speed which is 45 multiplied by 3 which is
5 3 ja 15, 1 here, 4 3 ja 12, plus 1, 13. That much kilometer. That's your answer here in this case. Fine. Okay. Now is the fifth question. Hari runs at the speed is 12 kilometer per hour. How far मतलब हमें निकालना है d distance and the time is 2 1 by 2 or we can write it 2 to the 4 plus 1 5 upon 2 hours. That's your time. So we already know speed is equal to distance over time. So distance will be equal to speed into time. So that means speed is 12 and the time is 5 upon 2. Cancel out 6 ja. So it is 30 kilometer. That's your answer. Fine. So the next, this is your sixth question. A runner cover a distance of 270 meters in 30 seconds. Find the speed. The value of speed is unknown. So we have the formula speed is equal to distance over time. So it will be 270 upon 30. Cancel out zeros. 3 1 ja 3, 3 9 ja 27. So it is 9 meter per second. That's your answer. Seventh question. A van travelled a distance of 75 kilometer in 1 by 2, that is 2 1 ja 2 plus 1 3 upon 2 hours. And what is the speed? Speed is distance over time, which is 75 upon 3 upon 2. So it will be reverse. Fine. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja 25 2 ja 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour will be your answer for the seventh question. Fine. Now comes question number 8. An aeroplane travelled a distance of this one 4320 kilometer in, the time is given 6 hours. Find its speed in kilometer. So speed is kilometer per hour. So speed is distance over time, which is 4320 upon 6. Let's reduce it. 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 2 1 ja, 2 6 ja and 0. 3 1 ja 3, 3 720. So it is 720 kilometer पर आवर. बट यहाँ पर हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर पर, यहाँ पर वी विल हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो इट विल बी 720 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18. 5 अपॉन 18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड. इट्स द जनरल वे. सो 18 1 जा 18, 18 4 ja 72, 5 4 ja 20. So it is 200 meter per second. 200 meter per second. So meter per second में convert करने के लिए what we do, we multiply the speed by 5 upon 18. Now is ninth question. Ravi can swim 100 meter in 2 minutes. So time is 2 minutes. You have to find the speed, that too in kilometer per hour. Fine. So first we are going to convert minute into second. So it will be 2 multiplied by 60, which is 120 seconds. Okay. So now speed is equal to distance over time. So it will be distance is 100 and the time is 120.
So you can reduce it. अब मुझे this answer will be in मीटर पर सेकेंड, आई विल हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर. सो किलो मतलब बड़ा, है ना. तो हमारे पास 18/5 या 5/18, इन दोनों में से किसी एक से हम मल्टीप्लाई करते हैं. फाइन. सो किलो मतलब बड़ा, सो बड़ा नंबर ऊपर आएगा 3/5. सो इट विल बी 3 4 जा 12, 3 6 जा, फाइन, 5 2 जा 10, 5 2 ja, and it is 3. So it is 3 kilometer per hour will be your answer. Fine. So it is 3 kilometer per hour. किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना था, तो किलो बड़ा होता है तो 18 ऊपर आएगा, 18. Fine. Now is question number 10. Question number 10, what does it say? The distance between Bhopal and Nagpur. The distance is 380 kilometer. The distance between Bhopal and Nagpur is 380 kilometer. Andhra Express takes 6 hours and 40 minutes. So time is 6 hours and 40 minutes को भी हम hours में convert कर लेते हैं. So it will be 40/60, 3 ja, fine. So it is 6 2/3, or we can say 6 3 ja 18 plus 2 20/3 hours. ठीक है ना. Now find the speed of the train. So you'll have to find out the speed. So speed is distance upon time. Distance is 380 and time नीचे है तो ये reverse हो जाएगा. It will be 20 और ऊपर आएगा 3. So cancel out. 2 1 ja 2, 2 9 ja 18, and 19 3 ja, yes, 57 kilometer per hour. That's your answer. Fine. Okay, now is 11th question. I hope you are understanding this exercise. This is very important and very easy also. In an athletic meet, a runner covered a distance. The distance is 1.5 kilometer and the time given is 4 minutes. So find the speed in kilometer per hour. So we'll have to convert this minute into hour. How? By dividing it with 60. Fine. So we'll have to divide it with 60. 60 से हमें इसको divide करना पड़ेगा. Fine. So it will be, what it will be? 2 2 ja 4, 3 ja. So it is 1/15. 1/15 hours. ठीक है ना. Now the speed will be distance over time, as we know. So it will be 1.5/1 into this will going up 15. Fine. 15 multiplied by 15 will be 225 and decimal at one place. So it is kilometer per hour. 22.5 kilometer per hour is the answer here in this case. Okay, now the next, this is your 12th question. So both cycles at a speed of, here they have given us the speed which is 32 kilometer per hour. How long will he take to cycle 152 kilometer? We'll have to find out the time here. So time को कैसे find out करेंगे? You're just going to exchange it. So it will be time is equal to distance over speed. Speed के नीचे आ जाएगा, time ऊपर. Find cross multiplication. So it will be distance. How much is the distance? 152 and speed is 32. Fine. So you are going to reduce it. 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14 and 2 6 ja again by 2. 2 8 ja 16, 2 3 ja 6, 2 8 ja. You can go again by 2, 2 4 ja 8, 2 1 ja 2 and 2 9 ja 18. So it is 19/4. So it will be 4 4 ja 16,
3/4, दैट मीन्स अब 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो इट विल बी 45 मिनट्स। 3/4 को हम अगर 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इन मिनट्स, सो 4 1 जा 4 जा, fine, so it is 45, so it is 4 hours and 45 minutes. That will be your answer here in this case. This is your question number 12. Now comes 13th question. In 13th question, what we are supposed to do? Express the following speeds in kilometer per hour. किलोमीटर में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो लाइक ए पार्ट इज 16 2/3, सो 16 3 जा क्या होता है 48 प्लस 2 50, सो इट इज 50/3। सो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलो बड़ा है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 18/5। फाइन, किलो बड़ा है तो 18/5, जो बड़ा नंबर है तो बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, ये हमेशा थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो किलो 18, फाइन, सो 5 1 जा 5, this will be 6, so it is 60 kilometer per hour. Let's take one more part. Which one I should take? Anyone? Let's take C part. C part is this is your 300 meter in 15 seconds. So speed will be 300/15. So it is 15 2 जा 30. So it is 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें तो चाहिए किलोमीटर, सो किलोमीटर मतलब बड़ा नंबर ऊपर, सो इट इज 5 4 जा 18 4 जा 72, फाइन, सो इट इज 72 kilometer per hour. The other parts you can do by yourself, fine, the same way. Now comes express the following in meter per second, like A part 36, this is in kilometer per आर, सो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। मीटर मतलब छोटा, तो यानी कि ऊपर क्या आना चाहिए, छोटा नंबर, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, फाइन। लेट्स टेक सी पार्ट ऑल्सो 14.4, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में, मीटर मतलब छोटा नंबर, तो यहाँ क्या आएगा, छोटा नंबर 18 5/18, सो इसको कट करेंगे, 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 4 जा एंड 3 8 जा, सो इट इज 0.8, सो 8 5 जा 40, यहाँ डेसिमल आएगा मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ इज 15th part. Shankar traveled a distance of 216 kilometer by car in 4 hours. Find the speed in meter per second. So speed will be distance over time. Fine. So it will be 4 4 5 ja 4 4 ja. So it is 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें तो चाहिए स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। छोटा है तो ऊपर क्या आना चाहिए, छोटा नंबर 5/18, फाइन। सो 5/18 से इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सॉरी इट वाज 54, so 18 1 जा 18, 18 3 जा 5 3 जा 15 meter per second, fine. So that's how you are going to do it. Okay, now the 16th one, 16th question कैसे करेंगे, Shyam and Ankur both use the cars to go to their offices. अपने ऑफिस जाने के लिए वो कार यूज करते हैं। Shyam covers a distance of 16 kilometer in 30 minutes, ठीक है ना, श्याम इतना कवर करता है, while अंकुर covers a distance of
हम DA से अंकुर का लिख देते हैं. Fine. Ankur covers a distance of 12 kilometers in time. How much time he takes? 20 minutes. Fine. Which of two drives fast? कौन ज्यादा फास्ट ड्राइव करता है? Let's see. So सबसे पहले तो हम इस टाइम को हमें मिनट में दिया हुआ आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So we are going to divide it with 60 and 60. 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे. So it will be 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So it will be 1/2 hour. And here also it will be 1/3 hour. Fine. So आपके पास हम शाम स्पीड अगर हम निकालते हैं तो इट विल बी कितने आएगी शाम की स्पीड? What will be the शाम speed here? Let's see. It will be distance over time. Distance is 16 and time is 1/2. 1 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. So it will be 32 किलोमीटर पर आवर. तो ये आई हमारे पास शाम की स्पीड. Now comes अंकुर स्पीड. उसकी स्पीड कितनी होगी? 12/1 और ये 3 ऊपर जाएगा. So it is 36 किलोमीटर पर आवर. So who is driving faster? Ankur. Ankur is driving faster. ठीक है. Question number 17. A motorist traveled a distance of 150 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour. He left at 11:30 a.m. and stopped for 45 minutes on the way. Stoppage time क्या है इसका? Stoppage time is 45 minutes. Fine. At what time did he reach his destination? कितने टाइम में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा? So time क्या होता है? Distance of our speed, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Distance is 150 and speed is 60. So you can reduce it. 3 2 just 6, 3 5 जा. So it is 5/2 hours उसको लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. ना उसने टाइम लिया 5/2 hours का. अब उसने क्या किया है? 45 मिनट्स का उसका वेट भी है. सो दिस इज योर 5/2 मतलब आवर्स. फाइन. अब 11:30 उसने स्टार्ट किया. फाइन. 11:30. अब 11:30 में 2.5 आवर्स आप इसमें ऐड करोगे तो हाफ एन आवर इसमें एक्स्ट्रा होगा. तो क्या होगा? 12 के बाद 1 o'clock. ठीक है ना? 1 o'clock एंड 2 o'clock. सो अगर वो विदाउट ब्रेक जाता तो 2 PM तक वो पहुंच जाता. लेकिन उसने लिया है ब्रेक. कितना? 45 मिनट्स का. तो 45 मिनट्स के लिए इसमें 2 PM तो ये है ही है जब उसने पहुंचा था. तो फाइनल आंसर विल बी 2.45 PM. ठीक है ना? 11:30 में आपने 2 hours और 2.5 hours and 45 मिनट एक्स्ट्रा वो ऐड करने हैं. फाइन. So that was all about this exercise. I hope you have understood it well. All the best for your exams. Prepare well and excel in your exams. Thank you. Thanks for watching.